Today we are going to study on next topic, respiratory system. I hope you are well aware of the respiratory system, or if you have read a little about it. Now today we are going to study in brief and all the important aspects of respiratory system. So, as my topic, you might have also studied this topic in the physio also. And today we are basically studying the anatomy of respiratory system. So here we start. First of all, regarding respiratory system, from where to where it consists of. First of all, the respiratory system is basically divided into two more parts: upper respiratory tract and the lower respiratory tract. Okay, the upper respiratory tract कहाँ से कहाँ तक होता है? It starts from the nose, the external layers, till the larynx, and the lower respiratory tract starts afterwards. From the trachea towards the further bronchus, then bronchioles, then alveolus, the further division is there. That way we are going to discuss in detail later. So, the respiratory tract, as we all know, it has two functions. There is a conducting portion and the respiratory portion. Conduction का रहता है passage के through, okay, and then it leads to how the the gaseous exchange occurs with the help of the lungs and how oxygen is supplied all over the body. So in the conducting portion, it transports air. Basically, we all know the Slide contents of the air. Most of the part is. Can anyone answer this? Air consists मैम of स्लाइड नहीं आ three रही है. components mainly: nitrogen, oxygen. The maximum part goes to the nitrogen, 78%, and 21% is the oxygen. Okay. In the conducting portion, it transports air. कहाँ से कैसे जाएगा? First, it starts from when we inhale, or we say in a technical term, this is inspired. So we are here talking about not rest of the gases, basically of the oxygen. And when we inhale, it includes the nose, then it enters to the nasal cavity, and further goes to the pharynx, larynx, from स्लाइड there it नहीं आ goes to रही है. trachea, then bronchus, then bronchioles, and alveolus, and finally drain to the lungs. Okay, and progressively smaller मैम airways. वॉइस क्लियर नहीं There are smaller airways called as alveolus, which has larger surface area, which where the exact gaseous exchange takes place. And from the primary bronchiole to the terminal bronchioles. ये लग रहा है कि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है. आ रही थी कि नहीं आ रही थी? Am I audible to all? Will you respond or Yes, say ma'am. something? Okay. यस मैम. Okay. स्लाइड नहीं आ रही है. मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही है. क्लियर नहीं आ रही है. Am I audible to all? यस मैम. यस मैम वॉइस क्लियर नहीं And आ can रही you है please see आपकी. the presentations on your screen? I hope no one is supposed to touch on the presentation because as per instructions, this will यस मैम. stop. यस मैम. यस मैम. Hope you remember. Are you people the same we have read about the cardiovascular system? Anyone remember? Please do respond so that I can understand whether you are able to hear me or not. Any one of you? यस मैम. Okay. So here we are going to study about respiratory system. What do you understand by respiratory system? Can anybody answer it? One of Ma'am is responsible for inhaling oxygen and exhaling carbon dioxide. right, right. Okay. In the respiratory system, it starts from where to where? Ma'am nose like pharynx, नॉस्ट्रल. trachea, bronchi, lungs, Yeah. these parts. It is broadly divided into two zones, na? Upper respiratory tract and lower respiratory tracts. Upper consists of the part in trachea, and below trachea it consists of the lower respiratory tract. Okay.
And the Yes, respiratory ma'am. system function as it's supposed to carry the oxygen conduction and the respiration. Respiration mainly includes inspiration and expiration. Inspiration means inhalation. Okay, and for that we require energy. And expiration is a passive process. The muscles, the respiratory muscles, they just relax out. And why we inhale oxygen कैसे अंदर जाता है? Because there is negative pressure. Because of the negative pressure, the air is inhaled, drained into the lungs. और कैसे कैसे from what all passages the air finally reaches to the alveolus and how the exchange occurs. In this, we are going to discuss this only. Okay? And what all the structures are there. So basic anatomy of that structures like larynx, pharynx, all these structures we are going to discuss in detail. So now as I told you all, it consists of the two parts, the upper respiratory tract and the lower respiratory tract. From nose to trachea, nose with the external layers, then the nose, nasal cavity, then the posterior choanum, then the posterior layers, and there occurs pharynx. Then continuation of pharynx is there is larynx. Then trachea, and the trachea is further divided into two bronchus. I hope you all have seen this diagram. This no? Here the nose, the external layers, and there are muscular ridges. Is what are the help of these ridges? These are mucosal folds, and here posteriorly lies the choana. We call this posterior layers are called as choana, and from there is pharynx till here to here. And after pharynx, what is this structure? Can anyone tell? What is this? This cartilaginous. Larynx. It is the smaller part is the Epiglottis. epiglottis. Larynx. दोनों के बीच में common passage होता है ना? Nasal cavity. Yeah. And then further from there to it continues as larynx. Posteriorly lies the esophagus. And here tracheal wings are present. And here further it is divided into bronchus, the larger ones with the larger lumen. And there is further tree-like branching pattern is there, further smaller, smaller, smaller. Bronchus is divided into bronchioles, then bronchioles into alveolus. And group of them are alveoli. In alveolus, this bunch, here it is shown that alveolus, here exchange takes place. I hope you all have read about emphysema. Na? In that term, we have read alveolus. What is the function? alveoli और destroy हो जाता Yeah. And what is the function of alveolus? It provides a larger surface area for the exchange. And in the emphysema, these septae, these smaller ones, they broke, and a whole single particle like structure exists. ये septations जो होते हैं खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? Surface area reduce हो जाएगा, and person suffers from oxygen insufficiency issues, ना? So but the respiratory का 16 है, और जो मैंने आपको बताया कि composed of ये respiratory smaller respiratory bronchioles, इसमें gaseous exchange होता है. Now breathing, we all know and we all say breathing. What does breathing consist of? Okay, breathing has two cyclic phases: inhalation and exhalation. Inhalation या inspiration, and exhalation or expiration. In the inhalation, we draw air into the lungs. Air may be mainly oxygen. Air में कितना परसेंट होता है ऑक्सीजन? Can anyone tell? 21%. Yeah, right, 21%. 21, correct. And here 1 ml of oxygen carries, you might be telling me आपको आगे बताऊंगी. Inhalation में because of negative pressure present in the lungs. पहले क्या होता है? In the fetal life, lungs are not active. The baby or the fetus, it gets all the nutrition and all the functions are done by placenta. The gaseous exchanges also occurs when when the baby is born, and the first inspiration is taking place. There is negative cavity which draws certain gas of air into the
lungs. Because of that negative pressure in the lungs, the air is drawn. And exhalation is there are respiratory muscles. You're going to read about them also. And when these expiratory muscles relaxes, these leads to exhalation. That is, in the basic term, we say that oxygen is taken up and CO2 is released out. Okay? सॉरी मैम, Yeah. मैम हिंदी में थोड़ा बोलिए। अच्छा अच्छा, ओके। देखो, इंस्पिरेशन होता है बेटा, इंस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, आप जो गैस है, गैस में भी मेनली कौन सी गैसेस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। जब हमारे लंग्स में अंदर नेगेटिव प्रेशर होता है, उस नेगेटिव प्रेशर की वजह से, जो कि बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, 180 एम इज आवर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड इनसाइड द लंग्स देयर इज नेगेटिव प्रेशर, मतलब जीरो से कम है। तो बिकॉज ऑफ होता है ना डिफ्यूजन, ज्यादा कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गैसेस एक्सचेंज होता है। तो ऐसे सपोज कर लो कि लंग्स में नेगेटिव प्रेशर है, मतलब कि जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, 180 एम होता है, उससे कम है। अगर हम जीरो से नीचे जाते हैं तो लेस होता चला जाता है ना नेगेटिव में। तो जो लंग्स है हमारा, वो ड्रॉ करते हैं एयर इनटू द लंग्स। इसकी हेल्प से इसमें बहुत सारे मसल्स काम करती है, रेस्पिरेटरी मसल्स। इसमें जो एलेक्मेजाई होता है, आप लोगों ने पढ़ा है, एलेक्मेजाई, स्टेनोक्लेडोमास्टोइड, ये सब भी सपोर्टिव मसल्स होती हैं। दे ऑल हेल्प इन इनहेलेशन। और व्हेन दीज रिलैक्स आउट, जब एयर लंग्स की कैविटी फिल हो जाती है, द एक्सचेंज जो है एल्वियोलस में होता है बिटवीन द ऑक्सीजन एंड द वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड द वेस्ट गैसेस। फिर वो उनको लेकर के एस्पिरेशन से वी ऑल एक्सहेल आउट ऑल द गैसेस। और एक्सहेल आउट में भी मेनली हम लोग कौन सी गैस कहते हैं, CO2। हम CO2 निकालते हैं एक्सपिरेशन में। ओके, नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, फ्रॉम नोज टू द larynx. Nose, nasal cavity, first the external layers, then the nasal cavity is there, then there are paranasal sinuses. Can anyone name paranasal sinuses? Have you heard of paranasal sinuses? Frontal, sphenoid, maxillary sinus, ethmoid sinus. What is the function of these sinuses? जो हमारा skull है, so these paranasal sinuses make it lighter. These are air-filled cavities. Skull का structure देखा है किसी ने? Have anybody holded that skull? Yes, ma'am. आप लोगों ने देखा उसमें sinuses? Yes, ma'am. पैरानेजल साइनस Yes, ma'am. बटरफ्लाई शेप होता है, पता है किसी को बटरफ्लाई शेप बहुत पूछा जाता है। Yes, yes. Pneumotoxic bone होती है। स्फेनॉइड। ओके, फिर फेरिंक्स देखा आप लोगों ने, फेरिंक्स On hook. आप लोगों ने रियल में नहीं देखा है। देखा नहीं है ना? अच्छा, ओके। आप इसको बुक से फिर देखने के ट्राई करना, तो वीडियोस रहते हैं, देख लोगे तो एक बार को ज्यादा अच्छे से रिमेम्बर रहेगा। लैरिंग्स पे कार्टिलेजिनस सिलिंग्स होते हैं, उसकी लैरिंग्स का कंटिन्यूएशन है ना ट्रैकिया का, उसके लोअर पार्ट से ट्रेकियल रिंग्स प्रेजेंट होती है। फिर ट्रैकिया दोनों तरफ कैसे बाइफरकेट कर जाता है दोनों स्ट्रक्चर्स में, ब्रोंकस में। और ब्रोंकस दोनों कहाँ, दोनों लंग्स में होता है, राइट एंड लेफ्ट लंग्स में। और जो ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ये क्या करता है, कंडक्शन कर रहा है। कंडक्शन का मतलब क्या होता है, लेकर के जा रहा है। ओके, इट्स कंडक्टिंग। देन इस डायग्राम में अच्छे देखो, इसमें समझने की कोशिश करो। यहाँ पर ये देखो क्या है, सबसे हमारे फ्रंट में होता है फ्रंटल साइनस, और यहाँ पर सबने स्कल देखा है ना, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट होती है जो कि इथेमॉइड बोन को बनाती है। क्रिब्रिफॉर्म प्लेट को पेयर्स करके कौन सी नर्व आती है? अच्छा, तो ज्यादा डीप में हो रहा है तो सुपरफिशियल पढ़ते हैं। चलो देखो, यहाँ पे आपके नॉस्ट्रल्स या फिर एक्सटर्नल ईयर्स, ये हो गई आपकी नेजल कैविटी। हम यूआरटी पढ़ रहे हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। वेस्टिब्यूल्स किसको कहते हैं? मस्कुलर फोल्ड्स ऑफ नोज जो होते हैं ना, उसको वेस्टिब्यूल बोला जाता है। ये जो फोल्ड होता है आपके नोज की जस्ट फ्रंट में, लिप के जस्ट ऊपर, वेस्टिब्यूल, दैट द मिडल सेक्टर पार्ट। फिर आपका क्या है, ये इंफीरियर मीटर्स है, ठीक है। एंड देन
ये जो है ये मस्कुलर रिजेस है। ये मैंने बोला था कि पोस्टीरियर नेर्व्स को कॉन्केव बोलते हैं। इनको डिवाइड किया गया, देखो सुपीरियर कॉन्का, मिडिल एंड इंफीरियर। फिर इसके बाद से यहाँ से शुरू हो जाता है पीछे से पैरिंग्स। उसके बाद यहाँ पर फोल्ड है ये वाला एपिग्लॉटिस। इसके आगे क्या आ जाएगा? लैरिंक्स। लैरिंक्स को बोलते हैं ना साउंड बॉक्स। वॉइस इज जनरेटेड, यहाँ पे हमारे वॉइस साउंड प्रोडक्शन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? Larynx. लैरिंग पैरिंग्स होता है कि लैरिंक्स होता है? Larynx, ma'am. Larynx. लैरिंक्स होता है ना। Transformation of trachea. लैरिंक्स के जब पीछे क्या लाया करता है? इसोफेगस। हम माउथ से कोई चीज खाते हैं तो व्हाट इट विल गो थ्रू, पीछे जाता है यहाँ से इसोफेगस में, ठीक है। और ये एपिग्लॉटिस फोल्डिंग क्लोज रहती है, इसीलिए जब हम व्हेन वी च्यू और व्हेन वी ईट समथिंग तो फिर तब तक ये एपिग्लॉटिस क्लोज रहता है। एंड व्हेन देयर इज डिस्क्रिपेंसी तो फिर द फूड एंटर्स इनटू दिस, क्या लग जाता है बच्चों को? फंसा लग जाता है छोटे बच्चों में, इट्स वेरी कॉमन। और ये जो फेरिंग्स का ही पार्ट है, ये जो नेजल पार्ट होता है, यहाँ पे नेजोफेरिंग्स होता है। वॉइस कैविटी के पास इसको डिवाइड करते हैं फेरिंग्स को इनटू ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स एंड ओके द लैरिंक्स। लैरिंक्स इज द साउंड बॉक्स। इसको लैरिंक्स के आगे क्या होता है? थायराइड। और लैरिंक्स के ऊपर क्या होती है? नीचे से यहाँ पे ट्रेकिया आएगा, यहाँ पे इसकी ट्रेकियल रिंग शुरू हो जाएगी जो फर्दर नीचे लंग्स का भी आगे के डायग्राम में लिखेंगे कंटिन्यूएशन। रेस्पिरेटरी म्यूकोजा का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। गॉबलेट सेल्स के बारे में पता है किसी को? व्हाट आर गॉबलेट सेल्स? यस यस मैम, मैम म्यूकस सेल करती हैं कॉपलेट सेल्स। म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स आर कॉल्ड एज गॉबलेट सेल्स। ठीक है। अब जो रेस्पिरेटरी हमारी पूरी म्यूकोजा एक ऐसी है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड है। और कॉलमनर जहाँ पे भी वो कंडक्शन होना था कैसी होती है? कॉलमनर एपिथेलियम लाइक रहती है। और इससे क्या सेक्रीशन होता है किसका? म्यूकस का। म्यूकस क्यों जरूरी है? ताकि एयर पैसेज ड्राई ना हो और जो भी डस्ट पार्टिकल्स और कैविटीज आप लेते हो वो सब जाकर के म्यूकस क्या करता है? इट जस्ट adhere all the particles into it and only the pure air. It leads to the helps a bit in the conduction also. और ये पूरी लाई करती है, हम सबको पता होता है कहाँ से? पूरी नॉस्ट्रल्स, साइनसेस को और सबको लाई, सब इसको लाइनिंग होगी ना म्यूकस की सब पे। और म्यूकस का मेन काम है कंटेमिनेंट्स। कंटेमिनेंट जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स हैं और जो वेस्ट जो हम एयर में इनहेल करते हैं, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं which are not easily visible but dust like particles, pollens, these are all trap into the mucosa। और जो सीलिया होता है, सीलिया क्या करता है? सीलिया का फंक्शन क्या होता है? सीलिया में मूवमेंट्स होते हैं ना, मोशन कराना। ये फिर इसको फर्दर म्यूकस को ट्रांसफर करने का मोशन का काम करते हैं। मूवमेंट करा करके इट विल थ्रो आउट ऑल द वेस्ट। ये देखो इसमें एक डायग्राम है, नेक्स्ट दिस डायग्राम हियर यू कैन सी म्यूकस का मूवमेंट ऐसे फ्रॉम लोअर टू अपर। यहाँ पर एक है सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है, ये वाली लेयर जो है सीलियाज है। और ये रहे आपके गॉबलेट सेल्स, ये छोटे वाले आपके स्टेम सेल्स इससे ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है। ये रहे गॉबलेट सेल निकालता है म्यूकस का फॉर्मेशन। अंदर वाली लेयर क्या होती है? लैमिना प्रोप्रिया। यहाँ से म्यूकस with carrying the particles it moves upwards and from the oropharynx it will throw out। मैम स्टेम सेल का फंक्शन क्या है? अच्छा बेटा, स्टेम सेल स्टेम सेल्स बेटा जो जैसे हमारे कोई भी बॉडी का सेल होता है किससे ओरिजिनेट होता है? दैट इज कॉल्ड एज स्टेम सेल्स। यहाँ पर ये जो स्टेम सेल्स है ये छोटे मतलब ये ओरिजिनिंग सेल्स हैं, इनसे ओरिजिनेट हो रहे हैं सेल्स, देन इट फर्दर गोइंग इनटू। और जो स्टेम सेल्स होते हैं इनमें जो ये सारी मैकेनिज्म है कैसे होगी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भी पार्ट आएगा।
तो इनमें सेंसेशंस आते हैं, देन दे विल फर्दर लेट टू ये मूवमेंट हो रहा है सीलियक की वजह से भी हो रहा है, बट हमारी जो ब्रेन है उसको ट्रिगर मिल रहा है, दैट्स व्हाई दीज आर नॉट इंट्रैप्ड। और जब म्यूकस जो है, अब जैसे आपने डिजीजेस पढ़ी होंगी, एस्मा पढ़ा है, एस्मा में क्या होता है? एस्मा, मैम इन्फ्लेमेशन ब्रोंकाई। हाँ, इन्फ्लेमेशन में क्या होता है पता है? इन्फ्लेमेशन, जब जैसे कहीं पे इन्फ्लेमेशन कैसे होता है, जो हमारे बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स होता है, पहले जैसे कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर बॉडी में एंटर करता है, हमारी बॉडी उसको रिएक्ट करती है एज अ फॉरेन मटेरियल, तो उसकी सराउंडिंग में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट कैसे होता है? तो हिस्टामिन होता है सबसे पहले, हिस्टामिन इज अ वेसोडाइलेटर, तो उस एरिया का ब्लड फ्लो बढ़ जाता है पहले जहां पर भी आपका इन्फ्लेमेशन होता है, बिकॉज बॉडी ट्राइज टू रिमूव और ईदर किल दैट पार्टिकल। और वहां पर सारे क्या होंगे, इंटरल्यूकिन्स आएंगे, इंटरमीडिएट IL-1 वगैरह जो होता है, ये आप लोग पैथो में पढ़ोगे आगे फर्दर। इन्फ्लेमेशन बेसिकली ऐसे कह लो कि बॉडी में जब कोई भी अनवांटेड पार्टिकल आता है, बॉडी ट्राइज टू रिमूव इट, फॉर इट मैनी केमिकल एंड फिजिकल मेथड्स आर देयर टू रिमूव दैट पार्टिकल। फिर अभी आप लोग पढ़ोगे आगे एपोप्टोसिस वगैरह, तो उसमें समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से। नाउ नोज, ठीक है, नोज तो सभी को पता है, इंटरनल, सबसे पहले एक्सटर्नल लेयर्स होते हैं, देन इंटरनल लेयर्स जो हमारे, और फिर कॉन्के जो मैंने बताया, एंटीरियरली नेजल कॉन्के, देन पोस्टीरियर कोआना भी बोलते हैं, पोस्टीरियर जो ओपनिंग्स होती हैं, और ये भी आपको दिखाया था सुपीरियर, मीडियल, इंफीरियर कॉन्के होते हैं, ये क्या मस्कुलर ब्रिजेस होती हैं, मसल फोल्ड्स होते हैं, और इससे लाइन में म्यूकस होते हैं, ताकि जब एयर डायरेक्टली आती है, अगर ये फोल्ड्स रहेंगे तो क्या कोई भी एंटर डायरेक्टली इनटू द ट्रैकिया लंग्स में नहीं जाएगा, पहले उन फोल्ड्स इसलिए होते हैं ताकि दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स व्हाटएवर कम्स एंड देन इट कंडक्ट्स। So folds in the mucous membrane that increases the air turbulence and ensures the moist air contacts the mucous membrane. Nose का फंक्शन क्या होता है? ये प्रोवाइड करता है, provides an airway for respiration. पहले तो नोज में रेस्पिरेटरी म्यूकोसा जो है वो क्या करेगी? मॉइस्चर रखी, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो हमेशा क्या करती है? मॉइस्ट रखती है और वार्म करती है, ताकि जब एंटर जैसे बॉडी में जो एयर है बाहर से आती है, इट विल मेक इट सेल्फ इनटू द जो बॉडी का टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, तो उसे वार्म करती है, ठीक है, वार्म रखती है और मॉइस्ट रखती है, और जो भी डस्ट पार्टिकल्स या पॉलेंस जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल्स हैं उन सबको फिल्टर करती है और क्लीन करती है, जो हमने एयर इंस्पायर करी है। उसके बाद ये कहाँ अंदर एंटर करती है? रेजोनेटिंग चैम्बर फॉर स्पीच। रेजोनेटिंग चैम्बर से मतलब हो गया लैरिंक्स, डिटेक्ट्स ऑर्डर्स इन द एयर स्ट्रीम। उसका बेसिक फंक्शन क्या है? हम फिजियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? स्मेल, सेंसेशंस पढ़े हैं बेसिकली 5, तो नोज का एक ये काम भी है, ऑर्डर को डिटेक्ट करना, और ये तो एक इसका क्लिनिकल एस्पेक्ट है कि राइनोप्लास्टी आजकल सभी को पता है कि सर्जरी सब लोग अपनी उम्र मर्जी से शेप चेंज कराते हैं, तो उसको बोलते हैं नोज की सर्जरी को राइनोप्लास्टी। फिर नोज में भी बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं जो आगे चल के आप लोग पढ़ोगे, DNS वगैरह होता है, तो उसमें क्या करते हैं? मैंने पैरानेक्सल साइनसेस पूछा था आप लोगों से, तो पैरानेक्सल साइनसेस क्या होते हैं? मैम स्क्रीन नहीं शो कर रही है आपकी। क्या बेटा? स्क्रीन शो नहीं हो रही है? शो हो रही है। यस मैम। ओके, देन पैरानेक्सल साइनसेस, ठीक है बेटा। 4 bones of the skull contain paired air spaces called paranasal sinuses. मुझे लगा कि किसी ने स्क्रीन चेंज नहीं हो, आवाज थोड़ी क्लियर नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम। अच्छा, 4 bones of the skull contain paired air spaces called as paranasal sinuses. Am I audible? यस मैम। आज बारिश हो रही है एक्चुअली, आई थिंक वेदर इज नॉट गुड, तो थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो सकता है वॉइस क्लैरिटी में। अब हमने फ्रंटल साइनस पढ़ा था, अभी दिखाया था मैंने आप लोगों को, फ्रंटल साइनस होता है, एथमोइड साइनस होता है, स्फेनॉइड होता है, और मैक्सिलरी सबसे लार्जेस्ट कौन सा होता है? मैक्सिलरी इज द लार्जेस्ट वन। मैक्सिलरी साइनस, ये जो आपको जाइगोटिक बोन दिखती है
आप अपने टच करके देखते सबको बोलते हैं कि बहुत प्रोमिनेंट होती है, gives a good shape to the face. उसके जस्ट बिलो क्या लाया करता है आपका मैक्सिलरी साइनस, ये सबसे लार्जेस्ट एयर साइनसेस होते हैं, दोनों साइड होते हैं, इसीलिए बोला गया पेयर्ड साइनस. फ्रंटल साइनस भी जो है जहाँ पे हम लोग लेडीज यूज्ड टू वेयर बिंदी, दैट पोर्शन दैट इज कॉल्ड एज, उस पोर्शन पे लाया करता है फ्रंटल साइनस. इसकी स्पेशलिटी होती है कि व्हेनेवर द साइनस इज इन्फ्लेम्ड तो पेन क्या होता है केवल वहीं पे मेनली सेंट्रलाइज रहता है. और फ्रंटल साइनस जब इन्फ्लेम हो जाता है तो क्या कहते हैं उसको, एक स्पेल उसका हेडेक होता है जिसको बोलते हैं ऑफिस हेडेक, बहुत ही कॉमन है बिकॉज इन द सेंटर दैट साइनस इज इन्फ्लेम. एंड कैसे पता करते हैं कि दीज पैरानेजल साइनसेस आर इन्फ्लेम, एक तो रनिंग नोज होगी और दूसरी चीज व्हेनेवर अ पर्सन बेंड्स फॉरवर्ड्स मींस फील एक्सट्रीम पेन. Or what in the anatomical aspect these sinuses are present to decrease the skull bone weight. Okay, मैम because स्पेस आपकी yeah, pardon, decrease skull bone weight, warm moisture and filters the incoming airs. What is the function of these sinuses? These warms the air, then moistens the cavity and filters the incoming air. And this also helps a bit in adding resonance to the voice, which is generated in the larynx. Communicate with the nasal cavity by the ducts. And these are also lined by the same pseudostratified ciliated columnar epithelium. Here in this, let's see this diagram. These are frontal sinuses. Then these green color ones are the ethmoid, and behind them these are sphenoidal sinuses, and here these are maxillary sinuses. Now the pharynx. Pharynx is the common space used by both the respiratory and the digestive system, commonly called as the throat. Originates posterior to the nasal and oral cavities. अभी हमने देखा था ना डायग्राम उसमें, it was lying just posterior to the nasal cavity जहाँ पे end हो रही थी. Superior, middle और inferior जो concaves थे उनके just back से जो start हो रहा था that portion, the posterior to the nasal and the oral cavities and extends inferiorly near the bifurcation of the larynx and the esophagus. एपिग्लॉटिस था उसके बिहाइंड, आगे फ्रंट में क्या था लैरिंक्स एंड बिहाइंड दैट इसोफेगस. तो उसके टिल दैट पार्ट क्या लाया करता है pharynx, मतलब posterior most to the nasal cavity, nasal bifurcations, and then comes the oral one, oral cavities, and where there just larynx starts, the epiglottis is there, just posterior to it lies the esophagus, and up till there that portion is called as pharynx. It is the common pathway for both for air and food. उसके behind से food चला जाता है पीछे and air comes to the larynx generation and helps in the generation of the voice. And now pharynx की जो walls होती हैं, these are lined by a mucosa and contains skeletal muscles that are primarily used for swallowing. Flexible lateral walls जो pharynx है उसकी lateral walls होती हैं, ये डिस्टेंसिबल होती हैं. ठीक है, डिस्टेंसिबल का मतलब क्या होता है, मतलब एक्सपेंड कर सकती है एंड देन रिटर्न बैक टू देयर नॉर्मल पोजीशन इन ऑर्डर टू फोर्स स्वॉलोड फूड. जो हमने खाना खाया है दैट फूड, क्योंकि फैरिंग्स की जो वॉल्स है दोनों वॉल्स मूव करेंगी, मतलब डिस्टेंस में फूड कोई पार्टिकल आया जैसे कोई पाइप होता है विच तो फिर उसमें क्या होगा, जैसे कोई पार्टिकल आएगा सॉलिड, इट विल एक्सपेंड इटसेल्फ एंड देन रिटर्न बैक. इसकी वजह से एक मूवमेंट होता है जिसकी वजह से the food is swallowed into the esophagus further moved. And now the pharynx, अभी मैंने आपको बताया था ये भी, it is divided, the nasal part जो होगा वो nasopharynx है, oral cavity वाला part जो है वो oropharynx है, and behind the larynx lies the laryngopharynx. Now one by one we are going to describe this nasopharynx and the oropharynx and laryngopharynx. Here in the nasopharynx, superior most region of the pharynx. ठीक है, अभी ये डायग्राम देखा ना आपने, इसमें ये जो
यहाँ से स्टार्ट था पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी से, और यहाँ पे जैसे ही एपिग्लॉटिस आता है अपने लीरा ओरल कैविटी का पार्ट, तो यहाँ वाला पार्ट हो जाएगा नेजोफेरिंक्स यहाँ तक, यहाँ से हो जाएगा ओरोफेरिंक्स, और नीचे वाला पार्ट हो जाएगा लैरिंगोफेरिंक्स। तो जो नेजोफेरिंक्स है सुपीरियर मोस्ट रीजन ऑफ द फेरिंक्स कवर्ड विद pseudostratified ciliated columnar epithelium. Like located posterior to the nasal cavity and superior to soft palate, which separates the oral cavity. Normally, only air passes through. Material from the oral cavity and the oropharynx is typically blocked by entering the nasopharynx. उल्टा नहीं जाता ना कभी? By the uvula. Uvula, each one of you have seen your own uvula, okay? Of the जो soft palate होता है, soft palate से hanging structure, a muscular fold with hanging structure is present, that is called as uvula, which elevates when we swallow. जब हम कुछ खाते हैं, at the time that uvula, that muscular fold, which is hanging in the posterior most of the oral cavity, that part is called as uvula, and whenever food enters, the uvula descends upward, ascends upward to make the passage for the food. In the lateral walls of the nasopharynx, paired auditory U-shaped tube connects the nasopharynx to the middle ear. Okay. Then the posterior nasopharynx wall जो होती है, also अच्छा what are tonsils? Anybody know what a tonsil consists of? These are lymphoid tissues. क्या काम होता है? They provide immune response. इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करते हैं टॉन्सिल्स। जो पोस्टीरियर नेसोफेरिंक्स की वॉल है, वहां पर एक सिंगल लार्ज फेरिंजियल टॉन्सिल होता है जिसको बोलते हैं एडेनोइड्स। जब टॉन्सिल्स स्वेल कर जाते हैं, इट्स वेरी पेनफुल कंडीशन, and in the when there is recurrent larva within a year, 3 more than 7 infections occurs, then sometimes there is tonsils has to be removed. And now after nasopharynx, what is there? Oropharynx, the middle pharyngeal region, central में था ये, immediately posterior to the oral cavity, जहाँ पे end हो रही है उसकी just पीछे क्या है? Oropharynx lie कर रहा है। किस किस से बाउंड करेगा? ओरल कैविटी में सबसे पीछे क्या है? एज ऑफ सॉफ्ट पैलेट है आपके ऊपर, ओरल कैविटी में एंटर करो, सुपीरियरली जाओ, पहले क्या होता है? हार्ड पैलेट होता है, देन बिहाइंड दैट इज द सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट के भी बिहाइंड में एक मस्कुलर फोल्ड स्ट्रक्चर जो हैंग कर रहा होता है उसको क्या बोलते हैं? यूला। तो फिर ओरोफैरिंक्स जो खुल रहा है ओरल कैविटी के बिहाइंड में, तो के ऊपर से और फ्रंट से किससे सराउंडेड होगा? बाय द एज ऑफ द सॉफ्ट पैलेट सुपीरियरली एंड थायराइड बोन inferiorly. Common respiratory and digestive pathway through which both air and swallowed food and drinks passes. Oropharynx क्या होता है? Common passage होता है। Nasopharynx में food नहीं जाता है, ठीक है? Normally there are except जो कुछ issue होता है, वरना oropharynx अकेला ऐसा है जहाँ पर food भी जाएगा और आपका drinks, whatever you drink for a particular that oropharyngeal region। उसके बाद आगे जाकर के क्या हो जाएगा? जो एयर होगी वो लैरिंक्स में चली जाएगी एंड फूड पैसेज गोस थ्रू द एसोफेगस। इसमें क्या होता है? कंटेन्स नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। यहाँ पे नॉन केराटिनाइज्ड होती है। लिम्फेटिक ऑर्गन्स प्रोवाइड द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब मैंने बताया था लिम्फेटिक ऑर्गन्स टॉन्सिल्स जो होते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इंजेस्टेड और इनहेल्ड फॉरेन मटेरियल। जो भी हम लोग फॉरेन पार्टिकल जो बॉडी को अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, whenever these enter the lymphatic organs जो होते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम करते हैं and they act against them. Palatine tonsils are on the lateral walls between the arches and the lingual tonsils are at the base of the tongue. कैसे अब ओरिजिन हो गया? अभी हमने पढ़ा था एडेनोइड। एडेनोइड जो होता है वो कहाँ पे था? सेंट्रल में था। दोनों साइड पे क्या हो गया? लैटरली आपके पैलेटाइन टॉन्सिल्स हो गए, और टंग के बेस पे क्या हो गया? लिंगुअल टॉन्सिल्स। ठीक है, लिंगुअल हो गए टंग के बेस पे। इसका डायग्राम भी आता है, इसमें दिखाते हैं। ये रहा देखो, सॉफ्ट, ये रहा आपने कैविटी में एंटर किया इस डायग्राम में,
यहाँ पे जस्ट बिहाइंड यहाँ पे क्या होता है, हार्ड पैलेट होता है। हार्ड पैलेट के ये क्या हो गया, ये हैंगिंग स्ट्रक्चर मस्कुलर फोल्ड यूवुला। इसके बिहाइंड ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, सॉफ्ट पैलेट। और ये साइड्स में क्या है, दोनों टॉन्सिल्स हैं। और ये टंग है, अब यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। टंग पे जो बेस होगा, बेस पे कौन से टॉन्सिल होंगे, लिंगुअल टॉन्सिल्स। और इन दोनों के पीछे क्या होंगे, पैलेटाइन टॉन्सिल्स। और एडेनॉइड पोस्टीरियर मोस्ट पीछे की तरफ एक सेंटर में होता है, उसे बोलते हैं एडेनॉइड टॉन्सिल। अब ये एक अपर लैटरल व्यू है, इसमें दिखाया गया है frontal sinus. I have told you already. Whenever you try to answer any question, you always support that question with the diagram, so that अगर आप in case you are not able to complete your write your paper or the answer in time, but if you draw the diagram, the teacher is supposed to know, okay, the kid knows about this particular question what was asked, but he was not able to write it. So always try to support your answers with the diagram. Now after the we have read about pharynx. Pharynx was divided into nasopharynx and oropharynx and laryngopharynx. And after pharynx, what is the continuation? Now we are going to deal a little bit about larynx. Larynx is the voice generating things. Okay, voice is produced by the laryngeal muscles. Larynx is a voice box. It is short, somewhat cylindrical airway that ends in the trachea. You might have not seen the specimen, but it is round, surround. It is like a cylindrical pathway. Okay, airway, और directly आगे continue होता है trachea में. ये what prevents solid material from entering the lower respiratory tract. How it prevents? There is on the upper there is a leaf-like structure present that is called as epiglottis. Larynx conducts air into the lower respiratory tract and produces sounds, supported by a framework of 9 pieces of cartilage. 3 individual pieces and 3 paired cartilage. Cunate, cuneiform, these are cartilages that were present, that are held in place by the ligaments and the muscles. With the help of these 9 cartilages, in which 3 are paired and 3 are not paired, totally 9 cartilages, they form the larynx and that help in the generation of the voice. Here, अगर हम front view से देखेंगे, तो this leaf-like structure it is epiglottis. इसके front में क्या लाया होता है ये? Thyroid bone. Thyroid bone के आगे यहाँ पर क्या? Thyroid होता है. This is thyrohyoid. Because thyroid is there and thyroid bone is there, thyrohyoid membrane, and below it thyroid cartilage. Paired and unpaired muscles, we were talking about cricothyroid muscles here, and posterior to is this is the cricothyroid ligament, and these are cricoid cartilage, and it further continues into trachea. These are not wholly covering. These are C-shaped cartilages. Back side पे it does not cover completely. Okay, round नहीं होते हैं ये. Last में ऐसे दोनों तरफ से जा करके posteriorly these form like a C. These are not wholly covered. 9 C ring of cartilage forms the framework of the larynx. Thyroid cartilage हमने सबसे ऊपर देखा. Thyroid cartilage. Adam's apple, hyaline anterior attachment of the vocal folds. When a fetus is born or whenever we all are in the smaller age group, we have a similar voice. But because of the action of the hormones, that is testosterone, की वजह से in the males they get a harder voice. Whereas in female testosterone is there but very little amount. So their voice are shrill and thrilling voice. Soft voice is there. In the cricoid cartilage,
Record cartilage is also ring-shaped hyaline cartilage. Okay? Arytenoid cartilages, these are paired. Okay, these are unpaired and these are paired to hyaline posterior attachment of the vocal folds. Cuneiform cartilage. In your level, you can just remember the names. Okay. What are please remember these 9 cartilages which are paired, and arytenoid, cuneiform and corniculate are paired, whereas epiglottis, cricoid and thyroid are unpaired. Total of 9 cartilages forms the framework of the larynx, which helps in the generation of the उनके वाइब्रेशन की वजह से साउंड इज प्रोड्यूस. जो एयर एंटर करती है इनमें इट हिट्स देन inferior ligaments, they produce with the vibration of these inferior ligaments the sound is produced. So these are called as true vocal cords. And the superior जो vestibular folds थे हमने भी दिखाया था डायग्राम में. Where was the diagram? These vestibular folds. इसमें when you will see a cut section of the larynx especially, तब आपको बहुत अच्छा दिखेगा. उसमें vestibular folds बहुत ही prominent दिखते हैं. And in that case, those only guards or supports these superior ligaments are called as vestibular folds, and these are called as false cord because sound production जो होता है वो inferior ligaments की वजह से होता है, ना कि इनकी वजह से. ये केवल क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं vocal folds को. The tension, length and position of the vocal folds determine the quality of the sound. ठीक है. मोस्टली क्या होते हैं, पैरामीडियम पोजीशन में होते हैं. ये डायग्राम में दिखाते हैं. ये देखो, ये रहा आपका ओवरव्यू. ये क्या है, एपिग्लॉटिस है. ठीक है. ये आपको बेस ऑफ टंग है, रूट ऑफ टंग. ठीक है. ये रहे आपके, ये जो है जब हम लोग इसे उसके एंडोस्कोप के थ्रू देखते हैं या फिर लैरिंगोस्कोप के थ्रू, वो भी हमको एकदम क्लियर दिखता है. ये जो है आपके वोकल कॉर्ड्स हैं, व्हाइट कलर के जो स्ट्रक्चर्स हैं. और ये आपके जो सपोर्टिंग है, ये फॉल्स वोकल कॉर्ड्स हैं. ये और जो आपके पीछे जो रिजिस लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्या है आपकी ग्लॉटिस है. और ये आपकी कार्टिलेज, यूनिफॉर्म कार्टिलेज है, यहाँ पर कॉनिक्यूलेट कार्टिलेज है. ये एंटीरियर व्यू और ये पोस्टीरियर व्यू, आगे से पीछे की तरफ देख रहे हैं. ये क्लोज्ड पोजीशन में एंड दिस इज ओपन पोजीशन. अब lower respiratory tract, I'll continue or shall I revise things? What you all prefer? Now let me ask some questions so that I can know, have you understood anything? Someone please answer about upper respiratory tract. What it consists of, from where to where upper respiratory tract is present? From nostril to larynx. External nostril to larynx. External nostril, vestibule, nasal septum, nasal concha and mucus. There are names are shown in my screen. Okay, I'll name one of you and please answer so that it may be easily audible to me and to others also. Rajat Singh. I can see this. Rajat Singh, can you please explain about lower respiratory tract? Lower respiratory tract consists from trachea to alveoli. Yeah. ट्रैकिया का फर्दर किसमें डिवीजन होता है? From primary bronchus, then secondary bronchus, and so on. Right. And this, what is inspiration? I think ये आदर्श तिवारी. Can you answer it? Yes, Adarsh, ma'am. inspiration is an active process or a passive process? Active process. Passive. Inspiration is an active or passive? Active process.
Shubham answered. Uh, Adarsh, inspiration is an active process, okay? And pharynx. Somebody tell me about pharynx. I think Anjali Chauhan. Could you please explain something about pharynx? What do you understand by pharynx? Anjali? Okay, she is not able to answer. Then Anushka Gupta. Anushka, could you please explain about pharynx? And what have you heard about pharynx? What do you understand by pharynx? Common path of food and air. Anand. Anand answered, okay. You explain. Tell me something about pharynx. What I have heard a bit of pharynx. A common passage of both food and air. The voice is not so clear. Means only the Rajat Anand, these people have understood. Anjali did not respond, and what was her name? Second girl, Anushka. She didn't respond also. Now, pharynx. Class online class ले रही हूँ just a minute. इसमें जहाँ लड़का होगा किसी बदल में लड़का से So today what we have read up till upper respiratory tract and up till in the next class we will be discussing about the lower respiratory tract. Okay, so please revise the larynx, pharynx, and what do you understand by the inspiration, expiration process and the general structure about it. Okay, the how does the sound production takes place, these things please revise them, and we'll be starting with the lower respiratory tract in the next class. Okay, I hope all of you have understood, and please read the topics. yes, ma'am. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Slide